हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अल्ना बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये दिस बोन यू कैन सी इज द अल्नर बोन एंड इज द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म. इट हैज अपर एंड, shaft and lower end. तीन पार्ट है, अपर एंड, शेफ्ट एंड लोअर एंड. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट द साइड डिटर्मिनेशन कि साइड डिटर्मिनेशन अल्ना का कैसे करेंगे. फर्स्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर एंड एंड लोअर एंड. ये अपर एंड है तो यू कैन सी ये जो अपर एंड है वो हुक लाइक होता है विथ इट्स कॉन्केविटी डायरेक्टेड फॉरवर्ड. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द लैटरल बॉर्डर ऑफ द शेफ्ट. जो लैटरल बॉर्डर ऑफ द शेफ्ट होता है वो शार्प होता है एंड इट्स क्रेस्ट लाइक. जो ये स्टिलॉइड है, स्टिलॉइड प्रोसेस लाइज इन पोस्टीरियो मीडियल टू द राउंडेड हेड ऑफ अल्ना एज इट्स लोअर एंड. तो ये डिस्टिंग्विश हो गया. पहले हमने ये बता दिया अपर एंड कौन सा है, लोअर एंड कौन सा है. अपर एंड का जो कॉन्केव वाला पार्ट है वो फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होगा. लैटरल बॉर्डर है वो कैसा है, शेफ्ट उसका शार्प है, क्रेस्ट लाइक है, तो जो शार्प एंड होगा वो लैटरल बॉर्डर है. और जो लोअर बॉर्डर का जो स्टिलॉइड प्रोसेस है, यू कैन सी द स्टिलॉइड प्रोसेस, ये जो होता है इट लाइज इन पोस्टीरियो मीडियल टू द राउंडेड हेड ऑफ द अल्ना एज इट्स लोअर एंड. तो जो पॉइंटेड स्टिलॉइड प्रोसेस होता है उसका जो पोजीशन है वो कहाँ है, पोस्टीरियो मीडियल टू राउंडेड हेड ऑफ अल्ना है. So this is all about the side determination of the ulna. Now we will talk about the general features of the ulna bone. Upper end presents the olecranon and coronoid process and trochlear and radial notches. This is the olecranon process and this is the coronoid process. इस यहाँ पे जो notch है, this is the trochlear notch and this notch is the radial notch. First, we will talk about the olecranon process. Olecranon process projects upward from the shaft. It has five surfaces, superior, anterior, posterior, medial and lateral. तो जो एंटीरियर सरफेस है इज आर्टिकुलर. इसका जो एंटीरियर सरफेस है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस का इज आर्टिकुलर एंड इट फॉर्म्स अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच. पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर subcutaneous area which is separated from the skin by a bursa. Inferiorly, it is continuous with the posterior border of shaft of ulna and upper part forms the point of elbow. Medial surface is continuous inferiorly with the medial surface of the shaft. Lateral surface is smooth, continuous as posterior surface of the shaft. Superior surface in its posterior part shows a roughened area. So this is all about the olecranon process. Next we will talk about the coronoid process. Coronoid process projects forward from shaft and just below the olecranon and has four surfaces: superior, anterior, medial and lateral. Superior surface forms the lower part of the trochlear notch. Anterior surface is triangular, rough, and its lower corner forms the ulnar tuberosity. Upper part of its lateral surface is marked by a radial notch for the head of the radius. Annular ligament is attached to the anterior and posterior margin of the notch. Lower part of the lateral surface forms a depressed area to accommodate the radial tuberosity. It is limited behind by a ridge called the supinator crust. Medial surface is continuous with the medial surface of the shaft. Next is the trochlear notch. Trochlear notch forms an anterior surface that articulates with the trochlea of humerus to form the elbow joint. So remember, the trochlear notch forms an articular surface that articulates with the trochlea of humerus. तो trochlea कहाँ पे है, वो humerus में है. Trochlear notch कहाँ पे है, it is in the ulna. And next is the radial notch. Radial notch articulates with the head of radius to form the superior radio-ulnar joint. Next is the shaft. Shaft has three borders and three surfaces. Borders include interosseous or lateral border, anterior border and posterior border.
जो इंट्रोशियस या lateral border है is the sharpest in its medial to fourth. Inferiorly, it can be traced to the lateral side of the head. Superiorly, it is continuous with the supinator crust. Anterior border is thick and rounded. It begins above the medial side of the ulnar tuberosity and passes backward in its lower one-third and terminates at the medial side of the styloid process. Posterior border is subcutaneous. It begins above at the apex of triangular subcutaneous area at the back of the olecranon and terminates at the base of the styloid process. Surfaces, it has three surfaces: anterior surface, medial surface and posterior surface. Anterior surface lies between anterior and interosseous border and it is directed upward. A nutrient foramen is seen on upper part of this surface. Medial surface lies between anterior and posterior border. Posterior surface lies between posterior and interosseous border and it is subdivided into three areas by two lines, and oblique lines divides it into upper and lower part, and lower part is further divided by a vertical line into a medial and a lateral area. Now talking about the lower end. Lower end is made up of the head and the styloid process. Head articulates with the ulnar notch of the radius to form the inferior radio ulnar joint. Remember, जो ulnar notch है वो कहाँ पे है? Radius में है. It is separated from the wrist joint by the articular disc. Ulnar artery and nerve lies on the anterior aspect of the head of ulna. Styloid process projects downwards from posterior medial side of the lower end of the ulna and posteriorly between head and styloid process, and there is a groove for tendon of extensor carpi ulnaris. This is all about the general features of the ulnar bone. Please like the video and share it with your friends and subscribe to my channel, and thanks for watching.